Hello and welcome to Menace in the Monk. We are starting things off with a new segment called World Cup की गपशप और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट वर्ल्ड कप मेमोरी की. Manas, I'll start with you, brother. What's your favorite World Cup memory? Favorite when it comes to just controversy, it has to be the headbutt of Zinedine Zidane. वो controversy, like वो मेरे दिमाग, I don't think मैं वो कभी भूल सकता हूँ. एक और बहुत सही मोमेंट है जब मेसी गोल मारा और मैराडोना पागल हो गया था. If you remember, like he absolutely went crazy. And when I think of the World Cup, one of the most iconic moments is Senegal beating France, them celebrating. That has to be an iconic moment. There are moments after moments. Iniesta ka winner, of course, comes to mind. But these are my favorite moments. For you? There are two moments that stick out, bro. One is, of course, Owen का goal Argentina के against. What a strike! I think heavenly था वो भाई. मतलब हमारे एज के जो लिवरपूल फैंस हैं ना, they will relate. वो क्या था? और secondly, Baggio missing the penalty है. मतलब the divine ponytail. इतना उसके साथ मतलब it's like tragically beautiful and it's so reminiscent. तो भूल नहीं सकता उसको. Yeah, Abhi, let's find out what Baba thinks. माई फेवरेट मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप इज, वैसे तो देखो बहुत सारे हैं बट एक चूज अगर आपको करना हो तो सबसे आइकॉनिक मोमेंट तो वही होगा जो जिनेडिन जिडान ने मार्को मटेराज्जी को हेडर मारा था. मतलब हेडर मटेराज्जी को ही मार दिया बिल्कुल. एक वर्ल्ड कप फाइनल में आपके करियर के लास्ट गेम में जब एक्स्ट्रा टाइम में मैच चल रहा है, यू आर द मेन मैन फॉर योर टीम. और एक मतलब ऑब्वियसली जो मटेराज्जी ने कहा था वो सही नहीं था, बट दैट रिक्वायर्ड सम बॉल्स ऑफ स्टील फ्रॉम जिडान. और वो एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट है मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप हिस्ट्री का. आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट. तो फॉर मी दैट इज द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट. My favorite World Cup moment. Well, 2010 में I remember Netherlands team reached the finals. Or yes, Netherlands has been one of my favorite teams. और in that very World Cup quarter finals में we beat Brazil. That was एक बहुत ही important moment with Brazil having Kaká, again one of my favorite players at the time. बहुत interesting था the way we beat Brazil. और of course कुछ ड्रामा होता है, I remember that very much, red card and so on. लेकिन I think even more than this, talking about 2010 final, 2014 में we were actually pitted in the same group एज स्पेन. और स्पेन हमें बीट ली थी 2020 फाइनल में. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिवेंज मिशन बाकी था और पहला ही गेम में धो डाला हमने 5-1. Yes, 5-1 with my favorite player internationally, this Ian Robin scoring a brace. Absolutely brilliant. और मैं ऑफिस में था, I remember, and I celebrated like crazily. Didn't care at all. Let me take you back to 2006 FIFA World Cup. ये वाला वर्ल्ड कप काफी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई गॉट टू नो अबाउट द गेम. दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर आई एवर वॉच्ड अ फुटबॉल मैच. तो उस टाइम पे जर्मनी होस्ट कर रहा था एंड आई वाज इन हॉस्टल एंड इट वाज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच मैचेस इन मल्टीपर्पज हॉल. जस्ट इमेजिन कि कंपल्सरी है तुम लोग को मैच देखना, वो भी मल्टीपर्पज हॉल में बड़ी स्क्रीन पे, एवरीबडी वॉचिंग द मैच टुगेदर. सो दैट वाज क्वाइट स्पेशल फॉर मी जस्ट टू watch the sport, just to see people getting crazy about this game. तो मुझे नहीं पता था उससे पहले तक कि लोग इतने पागल हैं फुटबॉल के पीछे. एंड उस टाइम पे मैंने जब जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मैच, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक दैट वाज द मैच दैट आई वॉच्ड. और मेरी एक दोस्त थी जर्मनी से एंड शी वाज रूटिंग फॉर हर टीम एंड वो इतना पैशन देख के उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ठीक है, इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट बट पीपल आर एक्चुअली क्रेजी अबाउट फुटबॉल एज वेल हियर. तो मुझे लगा व्हाई नॉट वॉच इंडिया का मैच, इंडिया भी तो खेलेगा ही. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इंडिया तो है ही नहीं वर्ल्ड कप में. सो दिस इज हाउ मतलब आई जस्ट गॉट टू नो और केम अक्रॉस द स्पोर्ट. सो दैट्स व्हाई नेवर फॉरगेट दिस मेमोरी क्योंकि इस टाइम पे मुझे एक्चुअली में अवेयरनेस हुआ था फुटबॉल के बारे में. सो दैट वाज क्वाइट स्पेशल फॉर मी एंड इमेजिन वॉचिंग द मैच विद सो मेनी पीपल टुगेदर. नाउ आई विल डू एनीथिंग टू डू दैट, लाइक लिटरली एनीथिंग. अभी सारे अपने अपने स्क्रीन पे देखते हैं, सो वो मजा कहाँ, बट दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मेमोरी फॉर मी. So my favorite World Cup moment will have to be Messi's goal, obviously, with Iran. Yes, with Iran, क्योंकि actually में उस गोल की commentary मुझे बहुत पसंद है. Where the moment Messi gets the ball, commentator बोलता है give the ball to Messi and pray. And the moment he says that, Messi curls the ball into the top corner. वो गोल तो crazy था ही, but because of that commentary, like probably I was 13 back then, so obviously that's sticking to my mind, and that will have to be my favorite World Cup moment. My favorite FIFA World Cup memory. It has to be Rivaldo dummying the ball and letting it go to R9, Ronaldo Nazario, and him slotting the ball comfortably past Oliver Kahn in the 2002 World Cup final, hence completing
the greatest redemption arc or redemption storyline perhaps in football history for a single player. आई थिंक सारे अपने चारों वर्ल्ड कप मिलाऊं तो बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स रहेंगे. ऑब्वियस ही बात है, रोनाल्डो की वो हैट्रिक, या फिर रॉबिन वन पर्सी का वो फ्लाइंग हेडर अगेंस्ट कैसियाज, या फिर और बहुत सारे मोमेंट्स जैसे कि इनिएस्टा का वो गोल हो गया. बट आई थिंक एक मोमेंट जो सबको स्टैंड आउट करता है मेरे लिए, दैट वुड बी जिडान का वो रेड कार्ड इन द फाइनल अगेंस्ट इटली, एंड जिडान वॉकिंग डाउन द टनल राइट पास दैट ट्रॉफी. वो इतना चिलिंग मोमेंट था, वो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट था, प्लस इतना आइकॉनिक मोमेंट था ना कि आप उसको चाहो भी तो भी नहीं भुला सकते. और ऑब्वियस ही बात है, वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था, तो और ज़्यादा उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. My favorite football World Cup memory is the celebration that followed Spain's win over the Netherlands in 2010. I was living far away from home and I had just watched the game in a theatre-like setting on the large screen, and I was away from friends and family, so I was a little sad until a group of Spaniards called me over and I joined in their celebrations, and we celebrated like the way deserved to be celebrated. I even did the El Matador celebration that Raul does with the Spanish black bull flag that they had. And we didn't speak the same language, we were from different countries, we didn't know each other, but this memory is a beautiful one because it shows the passion for football that we have and how it brings people